Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And in today's video we are discussing subject-wise videos for Rajasthan Judicial Services. And in today's video we are discussing all the questions of Probation of Offenders Act from the year 2011 to 2021. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. Next question number 77. Which one of the following is not a condition precedent to release an offender on probation under section 4 of Probation of Offenders Act? The circumstance of the case, nature of the case, character of offender, amount of damage caused by the offender. इसका आंसर क्या रहेगा? D. Amount of damage, कितना damage caused किया offender ने? Not a condition precedent. Alright. So 4 is the answer. So next question was 65. In which of the following leading cases Honorable Supreme Court has held that benefit of Section 3(4) of Probation of Offender Act 1958 is subject to the limitation laid down in these provisions, and the word may direct in Section 4 does not mean must direct. ये कौन सा केस था? It was Ram Prakash versus State of Himachal Pradesh. Alright, so 3 is the answer. A. On failure to observe any condition on bond entered under Section 4 of Probation of Offenders Act, the court is at discretion to sentence the offender for the original offence as to impose penalty up to ₹50 in case of first failure. B. Statement: an offender above age of 21 years cannot be granted probation under Section 3 and 4. C. On failure of offender to enter into fresh bond on order of court under Section 8 of Probation of Offender Act, the court shall not sentence him for the offence of which he was found guilty. D. The amount of compensation imposed on the offender under Section 5 can be recovered as fine in accordance with the provision of CRPC. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? A, B, B, C, D और D, A. इसमें D and A statement are correct. 4 is the answer. Next question number 58. Who of the following have power to frame rules under Section 17 of Probation of Offenders Act? किसके पास पावर है? वो है स्टेट गवर्नमेंट विद अप्रूवल और सेंट्रल गवर्नमेंट. 1 is the answer. Next is question number 53. A court, after holding trial, convicts and grants benefit of Probation of Offender Act to an accused. So the following order is impermissible in law. Admonish the offender direct under Section 12 that conviction shall not have an adverse effect on his service. Direct the offender to pay compensation and cost. Direct the offender to furnish bail and bonds to keep peace and good behavior for 3 years. Direct under Section 12 that conviction shall not have adverse effect on his service. ये कहीं mention नहीं किया गया. Alright, so 2 is the answer. Next question of 43. Under which provision of the law, the court, while considering the case of a person convicted for an offence not punishable with death or imprisonment for life, is under an obligation to call for the report of probation officer. तो ऑप्शंस क्या है? सेक्शन 9, सेक्शन 7, 4. इसका आंसर क्या रहेगा? सेक्शन 4 में लिखा हुआ है ये. ओके, 3 is the answer. Next question is question number 51. Under Section 17 of Probation of Offenders Act, rules can be framed by. कौन फ्रेम करता है? State government with the approval of central government. So 4 is the answer. Next question number 59. While releasing the offender after admonition under Probation Act, the following fact need to be taken into consideration by the court. After admonition है ना ये. While releasing मतलब उसको छोड़ते समय डांट फटकार के छोड़ रहे हैं, तो क्या फैक्टर देखना है आपने? Number of previously registered cases against the accused, नेचर ऑफ ऑफेंस, कैरेक्टर, पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दी ऑफेंस. तो ये तीनों देखने हैं. या प्रीवियसली रजिस्टर कितने हैं वो मैटर नहीं करता, प्रीवियस कन्विक्शन मैटर्स. ठीक है, तो ये गलत है, नीड नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट. सो 1 इज द आंसर. एंड ये सब कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में ही. So friends, here we have discussed all the questions of
Prohibition of Offenders Act, which came in the exam paper of Rajasthan Judicial Services from the year 2011 to 2021. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं. तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.